Hello everyone, welcome to my channel and welcome to a new video. So guys, आज मैं करने जा रही हूँ डूडलिंग आर्ट, बट नॉर्मल डूडलिंग नहीं करेंगे। डूडलिंग करेंगे विद फेंकी हुई चीज़ों से। I mean जो चीज़ हम फेंक देते हैं उसकी हेल्प से हम डूडलिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं अपनी सारे सामग्री इकट्ठे कर लेती हूँ। ये देखो, ये है मेरी फेंकी हुई चीज़। इसमें है नट शेल्स, बटन्स, पर्ल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। स्टार्टिंग विद द नट शेल्स, पहले मैं इनको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। जैसे मर्जी वैसे स्टिक करते जाओ। स्टिक करने के बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ पे। पहला डूडल है एक मछली। मछली जल का रानी है, जीवन उसका पानी है। क्या कर रही हो मेरी छिलके के साथ? एंड द सेकेंड डूडल इज अलादीन का चिराग। एंड गेस करो कि थर्ड डूडल क्या होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी अ माउस। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज अ मोमबत्ती, मोमबत्ती। कैंडल। कैंडल को कंप्लीट करने के बाद हम जाते हैं एक गिफ्ट बॉक्स की तरफ, जहाँ पे मैंने नट शेल्स को एज ए बो यूज़ किया है। The last doodle with the nutshell is a hot air balloon. And it is done. So friends, अगर आप भी अपनी लाइफ में बोरिंग फील कर रहे हो, देन अपने आसपास की फेंकी हुई चीज़ों को कलेक्ट करो एंड स्टार्ट doodling. Trust me, it would be a great pastime. The next thing we are going to use in our doodle is button. एट फर्स्ट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेती हूँ। अरे भाई, तू गिर क्यों रहा है? सही से बैठ जाओ। यस, गुड। लेट्स स्टार्ट आवर डॉडलिंग एंड द फर्स्ट थिंग इज अ फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर कंप्लीट करने के बाद हम बनाएंगे एक प्यारा क्यूट गोलू मोलू बलून। ओके गाइस, बटन के साथ डूडलिंग एंड होता है। एंड यहाँ पे मैं कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगी, यू हैव टू टेल दिस। The fourth thing I am using here is ground nutshells. I don't know ground nutshells को हिंदी में क्या बोलते हैं, as I am not Indian, so guys let me know. इन नटशेल्स को मैं एज अ क्लाउड यूज़ कर रही हूँ एंड शावरिंग रेन फ्रॉम दिस नटशेल्स. I have a tiny super clay flower and I am using it also for doodling. इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी आज की डूडलिंग आर्ट वीडियो. So bye bye and take care.